नमस्कार देवियों और सज्जनों। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान असम राज्य के युद्ध नायकों के वीरता, बलिदान एवं निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने हेतु आयोजित इस भव्य समारोह में असम सरकार की ओर से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया उन्हें सम्मानित करें। भारतर माननीय प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डांगरियाक आदरणी जनाइছে मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा महोदय। धन्यवाद जनाइছো। এতিয়া অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাদেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। माननीय आसाम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, अहोমৰ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा डांगरिया, ইয়াত উপস্থিত থকা माननीय स्पीकार और লগতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকল, our guest, esteemed guest from Bangladesh, Lieutenant Colonel Qazi Sajjad Zahir, Air Marshal D.K. Patnaik, CNC Eastern Command, Lieutenant General Rana Pratap Kolita, GOC-NC Eastern Command, our High Commissioner in Bangladesh, Shri V.K. Doraiswamy, Vice Admiral D.K. Tripathi, 1971 के भारत पाक युद्ध में सम्मानित दिग्गज जो राज्य से हैं, विशिष्ट अतिथि, देवी और सज्जनों। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान असम राज्य के युद्ध नायकों को उनकी सेवाओं, बलिदानों और बहादुरी के लिए सम्मानित करने के लिए आयोजित इस विशेष समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय रक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस समारोह में जहां हम कृतज्ञ राष्ट्र युद्ध नायकों को सलाम करने के लिए एकत्र हुए हैं, वही माननीय रक्षा मंत्री का सम्मान तथा स्वागत करना हमारे लिए एक गौरव की बात है। मैं असम के माननीय राज्यपाल का स्वागत करता हूं, जो इस समारोह के विशिष्ट अतिथि है। मुख्य रूप से युद्ध नायकों को सम्मानित करने के लिए इस समारोह में उनकी उपस्थिति हम सभी को प्रेरित करेगी। এই মহৎ অনুষ্ঠানৰ গুৰি ধৰোঁতা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো মই আদৰণি জনাইছোঁ। তেওঁ বীৰ যোদ্ধাসকলৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী শ্বহীদৰ পৰিয়ালক আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ ব্যক্তিগতভাৱে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল। প্ৰাক্তন সৈনিকসকলৰ কল্যাণৰ বাবেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপত ইতিমধ্যে অনুমোদন জনাইছে। আজি এই অনুষ্ঠানত আপোনাৰ উপস্থিতিয়ে আমাক সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। মই লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্তৰৰ পৰা অহা ইয়াত উপস্থিত থকা সকলো বীৰ যোদ্ধা আৰু এই প্ৰতিগৰাকী শ্বহীদৰ পৰিয়ালক উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। I will also take this opportunity to extend a hearty welcome to Lieutenant Colonel Qazi Sajjad Zahir, who, having come all the way from Dhaka, is gracing this occasion with his kind presence. Our sincere gratitude to him for his stellar role in the 1971 war, for his service to the Mukti Bahini and the liberation of his country Bangladesh, for which he has been decorated with the Padma Shri Award by the Government of India.
मैं उन सभी युद्ध नायकों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए हैं और यहां मौजूद हैं। हम 105 युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए आज सम्मिलित हुए हैं, जिनमें से 9 वीर नारी हैं जो युद्ध के शहीदों की पत्नियां हैं, 8 दिग्गज जो युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, 2 युद्ध के कैदी, 72 जैसे जेसीओ एवं जवान और 14 अधिकारी युद्ध के दिग्गजों के रूप में हैं। इस प्रकार हम एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में युद्ध में अनेक उनके साहस, बहादुरी और अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए इन दिग्गजों का सम्मानित कर रहे हैं। मैं आज उपस्थित ऐसे प्रत्येक युद्ध दिग्गज का स्वागत करता हूं। मैं एयर मार्शल डी.के. पटनायक, लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, श्री वी. दोराईस्वामी, वाइस एडमिरल डी.के. त्रिपाठी और आज के समारोह में उपस्थित अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছো। আমি অতিশয় আনন্দিত যে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে বাংলাদেশৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট কৰ্নেল কাজী সাজ্জাদ আলী জাহিৰ ডাঙৰীয়া। आपको बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वतंत्रता पुरस्कार एवं भारत सरकार के पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब मैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल ख्वाजी सज्जद अली जहीर जी से इस विशिष्ट सभा के साथ कुछ शब्द साझा करने के लिए निवेदन करती हूँ। Excellency, Honorable Union Defence Minister, Excellency, Honorable Governor of Assam, Excellency, the Chief Minister of Assam, the Chief Secretary of Assam, respected audience, সবাইকে প্রীতি শুভেচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। Within 23 years, Jinnah's Pakistan became a Qabristan for us. Standing on the edge of the Qabristan, Father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, gave a clarion call for people to start preparing a prolonged struggle. Operation Searchlight was conducted by Pakistan military on 26 March. Savages in animal form conducted the genocide, but people of Bangladesh rose. At that time, in the time of need, the government of India, the people of India, the armed forces of India stood beside the people of Bangladesh. We fought for long 9 months. We won the war, and this was the liberation war of Bangladesh. There are very few countries in the world whose armed forces have liberated a country, and Indians are one of those proud countries. I see in front of them the war widows whose husbands and children or fathers died for us in 1971. The blood of the Indian soldiers, which was sacrificed for Bangladesh, is flowing, will flow, will continue to flow through Padma, Meghna, Jamuna, and Tista, and make our soil more fertile and the relationship more firm. The history says so, that together we fought in 71. History says so, that together we won the victory. Victory doesn't come cheap alone. It comes with bloodshed. We pay our deepest regards and gratitude and heartful of sympathy to every martyred families, every one wounded soldiers and their families for their great sacrifice for Bangladesh. But today is a different day. Now hope is on the move. We are out of Pakistan. We are the best friend of India. We like in the spirit of 71,
Let us build our countries together. You and us together. Our forces should join hand with your forces. Our people with your people. And let's make a history which will survive through eternity. We fought against Zalim and Zulm in 71. Now we should fight together against oppression, suppression, anywhere in the world. And that's very important. The battle of sacrifice should be remembered by all of us. Let us not forget that we had 1,601 Indian martyr soldiers who died inside Bangladesh in the battlefields, and more than 12,000 wounded. And we should not allow the 3 million martyrs who sacrificed their life among Bangladesh community. Let us not also forget that 98,99,305 refugees took shelter, and West Bengal and Assam were infested with the refugees. Indian people, their government, their forces gave treatment to them, sheltered them, made them survive. We are very grateful to them. Bangladesh is a grateful nation. Let history say so, that the gratitude should remain. Hope should be on the move, and we should make our friendship deeper and deeper. Again, commending the contribution of the martyred soldier, paying respect to them, will be our moral obligation. Thank you, Excellency, ladies and gentlemen, for your kind adherence. অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল কাজী সাজ্জাদ আলী জাহিৰ মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী जी, আজি আমাৰ এই সভাত উপস্থিত most respected Lieutenant Colonel retired Kazi Sajjad Jahir ji, Chief Secretary Assam, Air Marshal D.K. Patnaik, Lieutenant General R.P. Kolita, Vice Admiral D.K. Tripathi, Sri Bikram Doraisamy, Indian High Commissioner to Bangladesh, Bharat Bangladeshor যুদ্ধত শৌৰ্য আৰু বীৰত্বৰ পৰিচয় দিয়া আমাৰ সামৰিক বাহিনীৰ সেই সময়ৰ জোৱান তেখেতসকলৰ পৰিয়াল আৰু শহীদ পত্নীসকল, অসম চৰকাৰৰ মোৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকল, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, সন্মানীয় সুধীবৃন্দ। It is indeed my pleasure to welcome Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ji to this momentous occasion here today. At this historic event, we have assembled here to celebrate the great contribution of the war heroes of Assam who played an important and invaluable role in the Indo-Pakistan War of 1971. This program is a committed endeavor from our side to honor our brave soldiers who made supreme sacrifice and endured tremendous suffering while taking part in the war, responding to the call of the nation. At the outset, I therefore salute the bravery of the war veterans of the Indo-Pak War of 1971 and offer my deep tribute to all the soldiers who laid down their lives in the line of duty. At the same time, I also thanks Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ji for his presence
at this historic occasion, which is indeed a recognition of the importance of Government of India places on the war heroes and their sacrifice. मैं आसामवासी का ओर से हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समय निकाला और हमारा 20 आने का कष्ट किया। हम सब हमारे जो वार हीरोज था सबको एनकरेज करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट करने के लिए रक्षा मंत्री जी यहाँ के उपस्थित हुआ। मैं आसाम वासियों का ओर से राजनाथ सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। The Indo-Pakistan War of 1971 was a landmark event in the history of the Indian subcontinent. The valor and sacrifices of our war heroes not only registered historic victory of our country over Pakistan, but also played a decisive role in realizing the dream of an independent Bangladesh. We are aware that the Indo-Pak War of 1971 came to an end while the signing of Instrument of Surrender of Pakistan Eastern Command on 16 December 1971. This was the successful culmination of a war that witnessed an unconditional surrender of 97,368 defense personnel of the Eastern Command of Pakistan, which was the second largest surrender of the heavily armed military personnel since World War II. This simple fact is a testimony of the indomitable spirit and courage of Indian Army, Air Force and Navy. আজি আমি এই সুন্দৰ দিনটোত আমি ভাৰতৰ সেনাবাহিনী, বায়ু সেনা আৰু নৌ সেনাৰ বীৰত্ব আৰু শৌৰ্যক পুনৰবাৰ প্ৰণাম কৰিছো, যাৰ সন্মুখত 97,368 জন পাকিস্তানী সেনা, সশস্ত্ৰ সেনাই বিনা স্বত্বে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত এনেকে বৃহৎ আত্মসমৰ্পণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা আছিল আৰু এই ঘটনাই ভাৰতৰ সেনাবাহিনীৰ পৰাক্ৰমকে পুনৰ এবাৰ আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰে। সেই সকলৰ প্ৰতি মই মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু অসমবাসীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ভাৰতীয় সেনাবাহিনী, নৌ সেনা আৰু বায়ু সেনাৰ ওচৰত। The Indo-Pakistan War of 1971 has left an indelible mark in our history as the sacrifices of countless heroes of Indian Army and paramilitary forces continue to inspire us even today. During that war, 9 valiant soldiers from Assam, Krishna Mohan Rajbongshi, Ganak Chandra Roy, Ram Bahadur Setri, Badri Singh, Narayan Kolita, Thojendra Rabha, Suren Chandra Bosumotari, Hemkantra Kolita, and Khorgeswar Lalung made supreme sacrifices. Many sustained injuries but survived. Many led to the battlefront with outstanding leadership. All these war veterans keep us inspired with their unflinching patriotism and commitment to Mother India. However, Assam's role in this war was not confined to battlefront alone. Some of the police officers from Assam trained and equipped freedom fighters of the Mukti Bahini to take on the Pakistan army. 2 of them, Gyanananda Sharma Pathak Aru Birajananda Chaudhuri, belong to the Special Security Bureau. The guerrilla wing of the RAW played an important role in the liberation war.
Beside Pathak and Chaudhuri, D.N. Sonowal and Hiranyo Kumar Bhattacharya, both belonging to the Indian Police Service, were engaged in different roles in the operation. D.N. Sonowal served in the SSB on deputation at Salonibari when the training sessions were done. Bhattacharya in 2013 was invited to Bangladesh and awarded Friends of Liberation War Honor for his role in training a batch of Mukti Bahini in close combat practice. Ohomor Sena Bahinir uporiও আমাৰ ভাৰতীয় পুলিচ সেৱাৰ বিষয়াসকল বিশেষকৈ জ্ঞানানন্দ শৰ্মা পাঠক, বিৰাজানন্দ চৌধুৰী, D.N. সোণোৱাল আৰু হিৰণ্য কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই সেই যুদ্ধৰ সময়ত অপূৰ্ব দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল আৰু ভাৰতীয় সেনা বাহিনী আৰু বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিছিল। Apart from the government's help and cooperation, the way in which the people of Assam extended their helpful hand to the Mukti Juddhas and the refugees was something unique and phenomenal. In this context, I'd like to first mention Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika, whose songs had an electrifying effect on the Mukti Juddha. His song Jaya Jaya Navajato Bangladesh, Jaya Jaya Mukti Bahini, written as triumphal salutation to the newly sovereign Bangladesh and to the freedom fighters, still rings the hearts of the people. He was also awarded Friends of Liberation War Honor by the Bangladesh government. The civil society of Assam, especially those who lived in Borak Valley, came forward in a remarkable manner to help the refugees who had came from East Bengal. They not only had given shelter to the refugee, but also provided varied logistic support to the freedom struggle. आसाम के बराक घाटी के लोगों भी पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आए थे। उन्होंने न केवल शरणार्थी को ही आश्रय दिया था, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों को भी विभिन्न प्रकार से सहायता किए थी। The role of Assam civil society in this war is also a testimony of the serious relationship that India shares with Bangladesh. Recently, to mark 50 years of India's victory over Pakistan in the 71 war, we celebrated Swarnim Bijay Bars, which also coincided with the 50 years of independence of Bangladesh. It is a notable coincidence that both India and Bangladesh are celebrating their 75th and 50th independence of their nationhood respectively. We understand that while our brave hearts keep us secure, we also at the same time have a bounden responsibility to stand by them and their families. I am glad to inform you that fulfilling our commitment, our government has initiated number of steps, including ex gratia of rupees 50 lakhs to the next kin of deceased army personnel, one job for their next of kin, reservation of 2% job in group A, B, C, D of Assam government, reservation of seats for their wards in medical college. We are also planning several other initiatives for their welfare, expressing our solidarity and gratitude to them. रक्षा मंत्री जी, मैं ये बोलने से मेरा गौरव होता है कि हमारा सरकार ने ये जो 11 महीना का सरकार चला, उस समय हमने एक सर्विसमैन का कल्याण के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय किया। मेडिकल कॉलेजों में हमारे एक सर्विसमैन का बेटा बेटियों के लिए सीटों का जो रिजर्वेशन था, उनमें बढ़ावती किया। ग्रुप डी और सी का जॉब रिजर्वेशन 2% जो एक्सपायर हो गया था, उनको दोबारा हमने रिन्यू किया
और साथ साथ ग्रुप ए और बी में भी कल ही हमारा कैबिनेट ने निर्णय लिया कि एक सर्विसमैन के लिए 2% जॉब का रिजर्वेशन होगा। पहले हमारा जो एक मुआवजा बोलिए, कॉम्पेंसेशन बोलिए, रेस्पेक्ट बोलिए, जो बैटलफील्ड का कैजुअलिटी है उनको 20 लाख रुपया हम लोग देते थे, उनको अभी 50 लाख तक बढ़ाया और कल कैबिनेट में निर्णय लिया कि ये 50 लाख का साथ उनका निकट परिवारजनों को एक सरकार में नौकरी भी दिया जाएगा। हम ये बोलते हुए हमारा फक्र होता है, गौरव होता है कि हमारा जो असम है वो बहुत ही ग्रेटफुल स्टेट है और आगे भी हम सेनाओं का जवानों के लिए जो भी संभव होगा सरकार का ओर से वो हम लोग करते रहेंगे। We know whatever we do for our armed forces, we never commensurate the sacrifice they make to protect our national interest and keep us secure. Still, we have made humble effort through this program to pay our respectful tribute to our war veterans and their martyred soldiers who made lasting contribution to the Indo-Pakistan War of 1971. আমি কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে ভাৰত বাংলাদেশৰ সেই বীৰত্বপূৰ্ণ যুঁজত অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু চৰম আত্মবলিদান দিয়া, পাকিস্তানত প্ৰিজনাৰ্ছ অফ ৱাৰ হৈ থকা আৰু যিসকলে পাৰ্মানেণ্টলি দিব্যাংগ হ'বলগীয়া হ'ল সেই সকলোকে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমি একত্ৰিত কৰি নিমন্ত্ৰণ কৰি কিছু এক ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মানস কৰিছোঁ। আমি যিসকল বীৰ নাৰী, যিসকল প্ৰিজনাৰ্ছ অফ ৱাৰ আছিলে বা যিসকল বেটলফিল্ডত কেজুৱেলিটি হৈছিলে তেখেতসকলক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কৰ কমলেৰে সম্বৰ্ধনা জনাম আৰু বাকী সকলৰ লগত এই সভাৰ পিছত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এখন ফটোগ্ৰাফ উঠিব, যাৰ জৰিয়তে আমি সেই ফটোগ্ৰাফখন অসমৰ বুৰঞ্জীত আমি সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিম। मैं भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका का गीत कत जवानों मृत्यु होल के कुछ पंक्ति उसका साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। हालांकि ये गीत भूपेन दा ने 1962 के भारत सिंह युद्ध के दौरान लिखा था, पर इस गीत के भावों से हमेशा हम बहादुर सैनिकों के लिए सम्मान प्रकट करते हैं। ब्रह्मपुत्र के इस कवि संगीतकार ने लिखा था, कत जवानर मृत्यु होल कार जीवन যৌবন গল, সেই মৃত্যু অপরাজেয় তেনে মৃতক নহলো মই কিয়, আৰু মৃত মৌন শত জোৱানলে মোর অশ্রু অঞ্জলি যাচিলো, कोई जवानों के मृत्यु हुए कितनों का जीवन যৌবন बीत गए, ये मृत्यु अपराजेय अगर मैं भी इस मृत्यु का अनुभव कर पाता और इन मृत जवानों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, भूपेंद्र ने लिख के गया था। एक बार फिर 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के वीरों को सलाम करता हूं और शहीदों को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसी के साथ अपना शब्द को विराम देता हूं। भारत माता की जय।